तो कहाँ पे थे अपन 133 कुछ नहीं हुआ लास्ट टाइम इंटरप्शन हो रहा था थोड़ा सा मतलब इसलिए मुझे बंद करना पड़ा था या यानी वो पूरा 1 घंटा हुआ भी नहीं मैंने बंद कर दिया नाउ लेट्स डू इट करेक्टली ओके सो क्या है सोल्यूशन ऑफ टी एक्स सॉरी एक्स डी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट सो लास्ट टाइम अपन ने क्या इसको अपन ने सिंप्लीफाई किया था लाइक दिस थिंग डी एक्स सॉरी नहीं डी वाई इसका डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स सामने आ जाएगा इट्स एक्स अपॉन एक्स बाहर आ गया इट्स व्हाट वाई माइनस एक्स प्लस वन सो कुछ पार्ट इसमें अपने आप इंटीग्रेट हो जाएंगे बट देन फॉर सम अदर पार्ट्स लाइक बेसिकली वाई डी एक्स अपॉन एक्स कुछ और अपने करना पड़ेगा राइट सो हाउ डू यू गेट इट ऑफ द वाई डी एक्स अपॉन एक्स थिंग गेसिंग कि तुम एक्स से मल्टीप्लाई करोगे टू गेट सम स्टफ डन ठीक है सो इसको उस साइड भेज दो जस्ट डी वाई अपॉन वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स एंड दैट्स इक्वल टू और एक काम करो इसको भी उधर भेज दो सो जस्ट प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स टाइम्स या फिर एक काम करो उसको ही रहने दो उधर हु केयर्स इट इज दिस थिंग इट्स नेगेटिव वन प्लस वन अपॉन एक्स टाइम्स डी एक्स ओके सो पहले तो क्लिक करना है कि या यू हैव टू मेक अ डिफरेंशियल फ्रॉम दिस तो अपन कैसे करेंगे इसको इसमें नेगेटिव वन अपॉन एक्स है यहाँ पे वन अपॉन वाई है दैट्स वियर्ड यहाँ पे एक वाई एक्स्ट्रा में आ गया है फॉर सम रीजन लाइक वन अपॉन वाई स्क्वायर अपन कर सकते हैं दैट्स वन थिंग और कुछ to that I guess. Oh yeah, okay, that would make sense, but actually नहीं वो नहीं होगा. That is not doable. यार ये यहाँ पे y extra जो आया that doesn't make sense because that should not have been there. So, x dy minus y square dx. That's basically what happened, right? Mm-hmm. देखो एक differential form तो करना है but how? So and you can only multiply by x or something, right? Okay. Now think about it. सिर्फ x वगैरह से मल्टीप्लाई करोगे एंड देन यू स्टिल नीड दैट हाउ यहाँ पे सिर्फ y है हाउ इज दिस गोइंग टू वर्क आउट नो इट वोंट यहाँ पे दो का डिफरेंस है राइट सो सिर्फ पॉलिनोमियल्स से नहीं होगा यू नीड समथिंग एल्स फॉर दिस लाइक व्हाट ओके ये तो तरीका काम नहीं करने वाला सो मे बी विल हैव टू डू इट इन सम अदर वे सो ये तो ऐसे काम ही नहीं करेगा राइट हाँ 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 like x dy फिर यहाँ पे y स्क्वायर dx आ गया सो वो होमोजीनियस तो नहीं रहा किसी भी एंगल से सो यू विल हैव टू थिंक ऑफ समथिंग एल्स सो इसमें क्या है y स्क्वायर माइनस एक्स वाई है यू कैन राइट विद y टाइम्स y माइनस x एंड देन dx और समथिंग ट्राई करते हैं वैसे सो x dx इज इक्वल टू y टाइम्स ऑफ y माइनस x dx प्लस y dx ओके और ये dx नहीं यहाँ पे क्या चाहिए dy चाहिए सॉरी x dy इंटरेस्टिंग अगर मैं इसको उधर भेज दूँ देन आई जस्ट गेट लाइक x dy minus y dx is equal to y times of y minus x dx ये नहीं यार ये अजीब है this doesn't make any sense something else इसको अपन डायरेक्टली सेपरेट भी नहीं कर सकते ना इन चीज़ों को तो अच्छा इसमें ऑप्शंस क्या क्या है इसमें वन अपॉन वाई के बारे में बहुत यूज हो रहा है इसमें वन अपॉन वाई के बारे में तो सोचना है ओके लेट्स जस्ट पुट y is equal to 1 upon f देखते हैं उससे क्या होगा so if y equal to 1 I know ये अजीब है and we don't know for sure इसमें क्या होने वाला है but let's just try putting this क्या पता कुछ अच्छा हो जाए so dy is like negative 1 upon f square df so just negative x upon f square df is equal to so y बाहर आ गया just 1 upon f बाहर आया basically 1 upon f then you got y minus x plus 1 which is like 1 upon f minus x plus 1 and then dx right पहले तो ये एक f गया यहाँ से इट्स जस्ट दिस सो नेगेटिव एक्स डी एफ इज इक्वल टू वो वाला है उधर बेस्ट जस्ट वन माइनस माइनस ओके दिस इज वियर्ड सो माइनस एफ टाइम्स प्लस एफ टाइम्स वन माइनस एक्स एंड देन यहाँ पे डी आ जाएगा वेरी वियर्ड I mean f dx okay this might work out but then not so sure about it f फिर 1 minus x and then dx और यहाँ पे df आया for some reason के कैसे इसके आगे क्या f dx minus देखते ना क्या होता है just honestly wait यहाँ पे 1 कैसे आया यहाँ पे डिफरेंशियल चाहिए ना एक oh it should be dx over there
ओके, so इसको भूल जाओ, ये पूरा का पूरा dx में रहेगा. Oh, okay, okay, okay. Wait a second. So like dx upon, wait, नहीं इसमें f में भी आएगा ही. There's no way that you can remove that. इसमें ये जो extra वाला x आ रहा है ना, maybe that is the problematic thing. Because otherwise you can just write dx upon, okay, dy upon dx as a function of, oh, this won't help, huh? तो अपन क्या करें in that case? Should we just guess check or something? 1 upon y is equal to 1 plus c plus 1 upon y, that should have simplified it, but then it's not simplifying it. Okay, तो वो काम नहीं किया. What about x upon y equal to f? मतलब, oh, that would be not good. Uh, yeah, that's problematic. वो f उधर जाएगा, just this thing. But then फिर उसको उधर भेजो, it won't work out because, right. So I don't think ये ऐसे काम करेगा directly. इसमें c e power x minus 1 चाहिए for some reason. तो कोई और तरह से कुछ करना पड़ेगा. How do you solve this? Okay, इसमें x सेपरेट करने का मैं ट्राई कर सकते हैं, right? Let's see if that will work out. So this is this, x is equal to y square minus xy plus y times dx upon dy. That's weird. When I dy upon dx over there, that might work. But यहाँ पे एक extra x है, so you can't actually separate it like that. So y dy आ रहा है, maybe that's useful in some way. नहीं यार, but से dy upon y आ तो रहा था. Why don't we just put y as something like e power f, or let's try it like that, right? जैसे ऑप्शंस दिख रहे हैं उसको लग नहीं रहा है कि काम करेगा. सो देन ये कैसे भला मैं सॉल्व करूँ इसको? केस चेक. सो बेसिकली ये देखते हैं काम करता है कि नहीं. सो 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1 प्लस सी ई पावर x प्लस दिस सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. सो क्या है इसमें? dy अपॉन dx, that is what, just y square upon x minus y plus y upon x, right? Yeah. Oh, this looks weird. Huh. Okay, whatever, we'll see. It's like, देखेंगे ना क्या रहता है. So yeah, basically it's a negative 1 upon y square dy upon dx, that's equal to c e power x. Okay, मतलब dy upon dx will just be what? It will be like negative y square times c e power x, but c e power x is just it's just 1 upon y minus 1 actually. So this is what, just negative y plus y square, not exactly what we should have got, तो नहीं. Then something else. Okay, इसमें एक एक्स्ट्रा x आ रहा है. ओके, सो इसमें क्या आ रहा है? 1 अपॉन y इज इक्वल टू ये सब बट अपॉन x. सो हाँ, 1 प्लस सी. ओके, लाइक इसमें अपॉन x आ जाएगा. ओके, कूल. सो लेट्स सी कि ये काम करता है कि नहीं. सो डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब 1 अपॉन y आने वाला है इसमें. एनीवे, एक काम करो, उस x को उधर भेज दो, बिकॉज so x upon y equal to this thing, right? Yeah. इसका क्या हो जाएगा? Sometimes करना पड़ता है ऐसे. 1 upon y minus x upon y square y dash is equal to c power x, which is like, of course, we just know now, it's just x upon y minus 1, right? So, you know, like y square से multiply कर डालो, it's just y minus x y dash is equal to x minus x y minus y square. हाँ, क्या ये वो था? आई मीन वॉट वी शुड हैव गॉट इज दिस थिंग. इसमें अपॉन एक्स वगैरह तो आ नहीं रहा है. अच्छा ठीक है, डिवाइड होना एक्स से, विल सी. जस्ट y अपॉन एक्स माइनस वाई डैश इज इक्वल टू y माइनस वाई. ए, ये तो काम कर गया यार. y डैश इज इक्वल टू व्हाट? y स्क्वायर अपॉन x, फिर माइनस, ओके, फिर माइनस y प्लस y अपॉन x. ए यार, दिस एक्चुअली वर्क्स. सो b एक्चुअली डज वर्क. फॉर सम रीजन ये काम कर गया. आई गेस यही मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने की. गेस चेक. ओके,
134. ABC are distinct and non-zero real numbers in arithmetic progression. If the roots of the quadratic equation this are alpha and beta, such that 1 upon alpha plus 1 upon beta and alpha plus beta and alpha square plus beta are in geometric progression, then the value of A upon C is distinct non-zero real numbers in arithmetic progression में ABC. Okay. If the roots of the quadratic equation a x square plus bx plus c equal to 0 are alpha and beta. अच्छा, और ये जो है geometric progression में, then the value of a upon c is okay, it's like alpha plus beta upon alpha beta, so basically negative b upon c. So क्या है negative b upon c and alpha plus beta just negative b, of course, so it's negative b and alpha square plus beta square. Yeah, अजीब है यार, but whatever, which is just alpha plus beta का square minus r, just b square upon a, of course यहाँ पे upon a चाहिए ना. Yes. So ये चीज़ क्या हो जाएगी, just b square upon a square minus 2 alpha beta, so just minus 2c upon a. So these are in geometric progression, we're saying. Okay. Wait, what? Oh, so फिर ठीक है, स्क्वायर कर दो. b square upon a square is equal to b square minus 2ac upon minus 2ac कैसे आया, I have no idea, upon a square, and this times ये चीज़ negative b upon c. Okay, इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो गया, which is this thing. So b squared c is equal to negative b cubed and then plus 2abc. तो मतलब क्या हुआ इसका कि b cube plus b squared c is equal to 2abc. Wait, ये b तो हर जगह पे आ रहा है. Oh, I should have cancelled that in fact. So अभी करो ना, क्या फिर तुम्हें क्या मिलेगा, b squared plus bc is equal to 2ac. That is the thing. Okay, तो अब क्या, you can divide by abc I guess, but then not actually good. और क्या था वैसे. Oh, okay, first of all you can write it like this thing, b times of b plus c, but then b plus c is not good. You want a plus c, not b plus c. Right. 2a है, 2ac, you can pull that from there. Seriously though. Okay, you can always make 2a equal, sorry 2b चाहिए ना आपको. Oh god. तो फिर इसको अलग तरह से देखो, just write 2b as, अपने को b एलिमिनेट नहीं करता है in that case. Just too much. So क्या एलिमिनेट कर सकते हैं, a को एलिमिनेट कर डालेंगे. Yeah, I mean अपने को a upon c, oh god, so अपने को b नहीं चाहिए basically, right? Okay, we don't want b, so just write b as a plus c upon 2. तो एक आपको इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हो, just get like 2b का स्क्वायर, मतलब a plus c का स्क्वायर प्लस 4, फिर a 2 हो गया, just a plus c that times of c is equal to 2ac. Okay, 2 का like 8ac हो जाएगा ना. Yes. Which means what, like a plus c times a plus c plus 2c and a plus 3c. Yeah, if that is the thing, just b plus, yeah, that is equal to 8ac. So करो फिर क्या आता है, ये a square plus 4ac plus 9c square is equal to 8ac, मतलब यहाँ पे एक में निगेटिव आ जाएगा. Understood. So इसमें just negative negative डाल दो, and that's equal to 0 basically, right? Yeah. तो क्या तो a equal to c हो जाएगा, फिर a equal to 3c, but distinct बोला इन लोगों ने, so a equal to 3, so a upon c is just 3. So this is the answer. Next question. 135. 135 is a circle is inscribed inside a regular pentagon and another circle is inscribed about this pentagon. Similarly, a circle is inscribed in a regular heptagon, another circle, regular and important, right? Okay, about the heptagon, the area of the regions between the two circles is a1, a2. Okay, okay. If each polygon has a side length 2 unit, then so the following is true. Acha, fine. No big deal. We can do this thing. So a1 versus a2 देखना, right? Okay. So small r versus capital R देख लेते हैं. साइड क्या है, 2 दोनों की, so साइड मतलब ये चीज 1 हो जाएगी ना, ये 1 है, so just r and then this angle is what is this angle, this is like small r of course, right? So 2 pi upon n, but then half of that is like pi upon n is this angle. Okay, n is number of sides of course. So what does that mean, like अपने को चाहिए pi capital R square minus pi small r square. So capital R square minus
small r squared. But then capital R squared is like what? Oh, this is just, I should have known that, right? फर्क नहीं पड़ता है क्या है. Huh. Well, isn't that interesting? My side length fixed, then this just becomes a fixed thing as well. Wow. Just wow. Right? For some reason, a1 equal to a2 हो रहा है. Can you believe that? Anyway, so yeah, just r minus r squared, that's just equal to 1 squared. Oh yeah, it is pi. दोनों में से yeah, so a1 equal to a2 equal to pi. So D is correct. Next question. 136. मुझे लगा नहीं था ऐसा होगा, मुझे लगा मुझे ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ी. Anyway, 136 is the number of ways in which the letters of the words this proportion can be written, okay, without changing the relative positions of the vowels and consonants. The relative position, what do you mean by that? समझा नहीं मैं क्या. वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट तुम अलग अलग ले रहे हो कि साथ में, तुम बोलना क्या चाहते हो यार? पोजीशंस ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, आई गेस तुम ऑर्डर की बात कर रहे हो. ओके, लाइक ओ ओ आई ओ, वो ऑर्डर वैसे ही चाहिए आई गेस, मे बी. एंड ओके, आई गेस यू कैन से सो. और फिर सिमिलरली लाइक पी आर, फिर पी, फिर आर, फिर टी, फिर एन, ऐसा चाहिए रहेगा, राइट? सो कितने इसमें, सो लाइक 1 2, देन व्हाट इज दिस सीरियसली. क्वेश्चन 1, कितने वॉवेल्स इसमें? एक, सॉरी कॉन्सोनेंट्स कितने? 1 2 3 4 5 6, राइट? सो 6 कॉन्सोनेंट्स एंड हाउ मेनी वॉवेल्स? 1 2, ओके, और ये 2 और ये 4, दैट्स करेक्ट. सो 4 वॉवेल्स, राइट? सो मेरे को उनको अरेंज करना है विदाउट चेंजिंग रूल्स. क्या लाइक 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, बिकॉज 10 फैक्टोरियल उनको मतलब ऑर्डर के बारे में भूल जाओ, जस्ट स्टार एंड तो टेक, और जो भी है उनको 2 स्पीशीज मान लो, और सारे, या सारे इंडिस्टिंग्विशेबल हो जाएंगे. या यू गेट द थिंग, ऑफ कोर्स इट्स 10c4. So 10 factorial upon 6 factorial 4 factorial, that is the thing. Except wait, नहीं, अगर अपन ने वो ऑर्डरिंग कर डाली, then after that we don't have to actually worry, right? Yeah, because उसमें वो particularly fit हो ही जाएगा, so no need to worry. Then it's just this thing. God, ये कुछ अलग ही हो रहा है ना यहाँ पे. क्या हो रहा है यहाँ पे, कर क्या रहा है exactly? 10 factorial upon 3 factorial 2 factorial 2 factorial, what? I don't know यार, क्या बोल रहे हो तुम लोग? अब ये क्यों 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसकी क्या जरूरत है आखिर? व्हाट इज दिस? आई डोंट गेट इट. नहीं यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा है. व्हाट्स द प्रॉब्लम? क्या इसमें समहाउ, नहीं, वो ऑर्डरिंग तो सेम रहेगी ना, रिलेटिव पोजीशंस. या ओके, दिस इज इट. आई डोंट नो मैं इसको कैसे इंटरप्रेट करूं, जो मैं इसको नहीं कर रहा हूं बस सॉल्व. 136 is just weird. 137. A parallelogram is constructed on this and that in magnitude of A equal to this thing, magnitude of B equal to 3. A hat thought B hat equal to 1 upon square 2, then length of smaller diagonal is. Okay, parallelogram construct किया तुमने इस पे और इस पे. अच्छा, तुमने ओके ये सब दे दिया मुझे, फाइन. देन दी लेंथ ऑफ स्मॉलर डायगोनल, एक डायगोनल कौन सा होगा? एक डायगोनल का एडिशन विच इज 6a एंड माइनस b, तो इसकी लेंथ ढूंढ लेंगे अपन. और दूसरा डायगोनल क्या होगा? 4a प्लस 5b. तो ये दो डायगोनल्स है. पहले क्या अपन देखते हैं क्या लेंथ होगी, जस्ट स्क्वायर, पहले तो लेंथ का स्क्वायर. 36a स्क्वायर विच इज, a स्क्वायर कितना है? a स्क्वायर इज जस्ट 8, b स्क्वायर इज 9 एंड 8 और p कितना होगा? सो 2 स्क्वायर ऑफ 2 times 3 times 1 upon square 2, just 6 I guess. Yeah, so let's do this thing. 36a square is just 36 times 8, which is, अपन ढूंढ लेंगे 36 8. फिर plus b square just 8. Okay, and then you want minus 12 ab, which is minus 12 times 6.
चलो करो 37 टाइम्स 8 मतलब कि कितना 24 and 56 which is 296, so 296 minus 72 which is 224, so पहले का 224 आ रहा है, दूसरे का क्या होगा, दूसरे का 4 plus b, so like 16a square 16 times 8 plus 25 b square, just 25 times b square कितना है, ही 8 है, शिट 9 चाहिए ना यहाँ पे, क्या कर रहा हूँ मैं फिर, दिस शुड बी 9 आई गेस बिकॉज या ओके, तो फिर ये ऐसा नहीं होगा, इस प्लस 1 सो 225 एक्चुअली, वॉट एवर। ओके, तो अपन क्या कर रहे थे, 60 टाइम्स 8 प्लस 25 टाइम्स 9 एंड देन क्या 20 स्क्वायर कर रहा हूँ ना मैं, 20 ऑफ कोर्स, वेट नहीं 40 बिकॉज या, सो 40 ए बी प्लस 40 बी मतलब कि प्लस 40 टाइम्स 6, ऑफ कोर्स ये वाला बड़ा दिख रहा है मुझे तो, but still 8 and 16, okay 8 and then you got 48 which is just 128 128 plus 18 45 is 225, अच्छा ये ऑलरेडी बड़ा हो गया, सो छोटे डायगोनल की लेंथ कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 15, so A is the answer. Next question, 138, 138 is if x times fractional part of what, sorry क्या कर रहा हूँ मैं, x square root of 1 plus f of x plus okay जो भी है, then f of x has okay x square root of 1 plus y square root of 1 plus x equal to 0, ऐसा बोलो ना यार, क्या है ये, ओके सो वो निगेटिव है वो जो भी है, सो स्क्वायर कर दो, जस्ट एक्स स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स बेसिकली, इसको उधर भेजो, व्हाट यू गेट, वाई माइनस एक्स टाइम्स वाई प्लस एक्स, या प्लस, so एक्स वाई कॉमन, जस्ट एक्स वाई कॉमन and you just have like y minus x is 0, so either y equal to x, पर दैट इज नहीं सेंस बिकॉज ये 0 नहीं होगा, सो दैट कांट बी द थिंग, or y plus x is equal to 0 I guess, which means that y is equal to negative x upon x plus 1, that would make sense, so yeah मतलब हो जाएगा, I don't know, maybe नेगेटिव है ना, तो ओके फिर हो जाएगा, ओके तो इसका करना क्या अपने को, अब वी कैन राइट लाइक दिस थिंग -1 + 1 यानी कि नेगेटिव 1 + 1 अपॉन x + 1 है, सो लोकल मैक्सिमम मिनिमा, इसका एक असिम्प्टोल है बस, उतना ही है और कुछ नहीं है यार, दिस इज एग्जैक्टली वन लोकल मिनिमम, इट हैज नो लोकल मिनिमम, ये कैसा, वेट व्हाट, बट दैट डजंट मेक एनी सेंस, आई डोंट अंडरस्टैंड, वेट अगर f ये है देन गॉड गॉड व्हाट इज दिस, ये होना चाहिए ना, दिस शुड बी द थिंग, सो आई डोंट गेट इट, इसमें मिनिमम मैक्सिमम तुम लगा ही नहीं सकते बिकॉज ये जो चीज है इसका एक असिम्प्टोल है, उतना ही है इस पे, सो नो एक्सट्रीम, आई गेस सी इज द आंसर, दो अजीब लग रहा है बोलना बट व्हाटएवर, 139 इज 139 नाउ, 139 is PQRS are two perpendicular chords of the rectangular, PQ इसमें चल, okay PQRS, wait a second, PQRS are two perpendicular chords of the rectangular hyperbola xy equal to c squared, perpendicular chords, interesting, if O is the center of the hyperbola then the product of the slopes of OP, scroll this out, hyperbola है अपने पास में, so PQQR का क्या है, ये perpendicular chords है, right, PQNRS का, okay whatever like जो भी इसमें होगा, आई डोंट नो, कुछ तो इसमें स्लोप है, सो PQRS so that they are perpendicular, I don't care about this, करना क्या आपने को इसका, okay if O is the center of the hyperbola then the product of the slopes of OP OQ O what OP okay OQ OS
अच्छा तो एक काम करो, उसको पैरामीटराइज कर देते हैं, सी टी एंड सी अपॉन टी, राइट? तो जो अपना स्लोप रहेगा जैसे एम, दैट इज इक्वल टू लाइक 1/t² आई गेस। थोड़ा अच्छा करना है तो लाइक सी अपॉन टी एंड सी टी कर दो, तो फिर एम इज इक्वल टू टी² हो जाएगा, राइट? ओके दैट्स बेटर। सो अपने को करना क्या वैसे, दी प्रोडक्ट ऑफ दी स्लोप्स, सो बेसिकली लाइक टी1 टी2 उसका स्क्वायर, राइट? एंड ये क्या है वैसे, ये परपेंडिकुलर कॉर्ड्स है, दैट्स ऑल इट्स सेइंग। दो के बीच का स्लोप हमें देखना पड़ता है, सी टाइम्स टी1 माइनस टी2 अपॉन सी टाइम्स ऑफ टी2 माइनस टी1, बिकॉज उल्टा है, अपॉन टी1 टी2, तो फिर ऊपर गया जिस नेगेटिव टी1 टी2, राइट? तो नेगेटिव टी1 टी2 मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि टी1 टी2 टी3 टी4 is equal to negative 1, of course. So square of that, just 1, product of slopes 1, right? Of course. So B is the answer. Next question. Yeah, 140. 140 is let the vertices of the quadrilateral ABCD be A, B, okay, जो भी दिया. If algebraic sum of the perpendiculars from the vertices on a variable line is 0, variable line, then this line will necessarily pass through सेंट्रॉइड उनका, ओके, फोर चीज है, बट हाँ तुम समझ ही गए हो यार, सेंट्रॉइड। सो यू नो, -1 + 2 + 3 + 4 कर डालो, क्या मिला तुम्हें? 3 + 3, ओके, जो 6 + 2 8, 8/4 इज 2, 2 कॉमा -1 + 1 तो गया, it's just 4/4, just 1, so 2, 1, it will pass through that, so B is the answer. Next question. मैंने 1000 बार देख चुका हूँ, so I know the thing. 141. If the angles split by the sides of a triangle at orthocenter and center are equal, then the triangle is. Oh, what? So एक साइड है ऑर्थोसेंटर और एक सेंटर, दोनों पे तुम्हारा सेम एंगल सबटेंडेड है। ओके, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि यानी वो दोनों इनफैक्ट सेम ही। गॉड, क्या कर रहा हूँ मैं ये? पास थ्रू दैट, राइट? वेट, इन सेंटर, हाँ। अच्छा, ऑर्थो सेंटर की एक बार अपन सोच लेते हैं, ऑर्थो सेंटर की बात करते हैं। सो दिस इज अवर ऑर्थो सेंटर, समथिंग लाइक दिस। यहाँ से एक सर्कल पास हो रहा होगा, यहाँ से एक सर्कल पास हो रहा होगा, यहाँ से सर्कल पास हो रहा होगा, इनका एक यूनिक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दैट्स अवर रेडियल एक्सिस, राइट? एंड रेडियल सेंटर, या सो अपन जो बोल रहे हो ये है कि ऐसा कोई पॉइंट जो कि तीनों सर्कल्स पर है, तो उसको ऑर्थो सेंटर ही होना पड़ेगा। बट देन तुम बोल रहे हो कि इन सेंटर पे भी सेम एंगल सबटेंड हो रहा है, मतलब कि वो भी इस सर्कल पे होगा और वो भी इस सर्कल, समझ गया, मतलब वो दोनों सेम ही सर्कल हो गए, इक्वल ट्राइंगल है, एक ही तरीका है कैसा हो सकता है। सो सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 142। या दैट्स द ओनली वे, अगर तीनों साइड्स के लिए हो रहा है, दिस दिस वे ओनली। ओके, 142 हो गया। वेट व्हाट, ओके 141। f real to real is a function such that f of x is equal to x cube plus x square f dash of, okay, f dash 1 plus x times f double dash 2, ठीक है। then the value of f of 2 is, समझा, this is f of x, huh? Okay, you know, let's put like x equal to 0, so not exactly what I want actually. So पहले अपने को, hmm, you can put x equal to 0 because it will make some stuff happen. 0 अच्छा लगता है, but then not probably what it should be. इसका एक डेरिवेटिव लो, एक डेरिवेटिव लो और से 1 पुट करो पहले तो, या फिर एक काम करो, थर्ड डेरिवेटिव लो और उसमें, या ओके दैट वुड मेक सेंस। सो ये तो गया, ये भी गया, ये भी गया, बिकॉज सेकंड डेरिवेटिव कांस्टेंट हो जाएगा, थर्ड में 0, just 3 times 2 times 1, right? That will be this thing. So f triple dash of x is basically just all the time, it's just what, 6, right? So f of x is equal to x cube plus f dash 1 x square plus f double dash 2 x plus 6, I guess, yeah, right? Because फिर second derivative ले लेते हैं. So what will you get? It's like f double dash of x is equal to 6x, because yeah, plus 2 times f dash of 1. So 1 put karo. Wait, what? Wait, how did this happen? For some reason वो cancel हो गया. Okay, 1 नहीं पूछते, 2 put करो. So f double dash of 2
is equal to 12 plus 2 f dash of 1. Okay, और क्या कर सकते हैं अपन? Just say f double dash of 2 is equal to a and f dash of 1 is equal to b अभी के लिए, right? So this is okay. Let's actually go the opposite way. इसको b बोलो और इसको a बोलो. So this is like what? This is just ये ऐसा हो जाएगा, right? And what this becomes is like b is equal to 12 plus a, sorry 2a. अच्छा ये तो हो गया. This is one equation that you have. अपने को एक और लेना पड़ेगा ना. So just take the single derivatives like f dash of x. That's what, like 3x square plus 2ax plus b. अच्छा अब अपने करना क्या है? We just want to put 1 in there. So like a is equal to 3 plus 2a plus, सही से दिया ना अपन ने? इसमें अपन ने क्या किया था? Just 2 put किया था and then I hope it's what this was correct. Okay, 2a and then just put b over there, which means that uh, okay, a plus b plus 3 equal to 0. But then you know कि b क्या था? तो just वो put कर दिया. Just 3a plus 15 equals like a equal to negative 5. मतलब b is equal to 12 minus 10, 2. Okay, so now we got the thing like f is what? कहाँ पे मर गया अपना? x cube minus 5 x square plus 2x plus 6. Okay, that's the thing. So value of f of 2 is, इसमें 2 put करो, just 8 minus 20 plus 4 plus 6, which is, so this is like 10. So 18 minus 20 just negative 2. So D is the answer. Next question. 143. कैलकुलेशन यार सीरियसली कुछ और है नहीं, बस मैं हमें देने लायक 2dy upon dx plus tan x sin 2y is equal to secant x times 1 plus cosine 2y का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा. ओके, so 2y dash plus tan x sin 2, okay, secant x and then cosine of what like this secant x you are saying, secant square भी नहीं है इसमें, secant x times tan x, but you can always do like maybe not. अच्छा एक काम करो ना, instead of 2y just say it's u, so like du upon dx will be u dash plus tan x plus, okay, that is the sine of u, sine u is equal to secant x times 1 plus cosine u, I guess. Better, right? Let's multiply by cosine of x, so this will be like what? Cosine x u dash plus sine u cos and then sine x is equal to 1 plus cosine of u. Oh, interesting. Yeah, seen that somewhere. Cosine times u dash. Well, okay. यहाँ पे साइन u है ना, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? कोसाइन x, एंड इसका डेरिवेटिव फॉर दैट व्हिच नीड दैट, ओके वेट व्हाट, sine you need like cosine u for that, but then that's not here for some reason. Huh? You would need that actually. Okay, तो वो यहाँ पे क्यों नहीं है? It should be there. Like cosine u for that. Or is like 1 upon. That could work out. I don't have high hopes for that. ये से काम नहीं करेगा. यहाँ पे extra x sin u, that is the problem. Think. Sin u you will need like cosine u, but तो है नहीं यहाँ पे. Then now what? उसको उधर भेजा. It's like du upon dx upon du. No, it's so not good. अच्छा इसमें हर जगह पे क्या यूज कर रहे हैं लोग? They are using tan y and wait, अपना 2 कहाँ पे गया? Oh, इसमें 2 इन लोगों ने यूज नहीं किया. Oh, okay, समझा इन लोगों ने क्या किया होगा. So right, इन लोगों ने वो यूज ही नहीं किया. So 2y dash plus, so इसमें उन लोगों ने ये चीज की होगी, 2 sin y cosine y tan x is equal to secant x, and then यहाँ पे क्या, just 2
कोसाइन स्क्वायर y और समथिंग फिर डिवाइड किया होगा, राइट? यस, तो वो 2 हर जगह से कट गया होगा। डिवाइड करोगे तो पहले तो ये कोसाइन एक्स वाई डैश करो, कोसाइन एक्स वाई डैश प्लस साइन वाई कोसाइन वाई साइन एक्स इज इक्वल टू cosine square of y. Now divide by that, just cosine x, that times of secant square y dash plus, right, it's just tan of y then sine of x is equal to 0, or not 0, just 1. Yes, that is the thing. Okay, awesome. So मतलब क्या हुआ? This is okay, secant square of y times y dash चाहिए था, sorry यहाँ पे, whatever, it's derivative of this guy, and then it's like it's the derivative of sine x times, wait नहीं, ये डेरिवेटिव है यहाँ पे, और देन ये ओरिजिनल चीज थी, राइट? और व्हाट? हाँ, that should be the thing, right? It can't be tan x, that doesn't make any sense because uh, really that must be the derivative. यहाँ पे नेगेटिव चाहिए होगा ना, तो यहाँ पे नेगेटिव क्यों नहीं है? यहाँ पे नेगेटिव कैसे नहीं है? Wait, what? Unless कुछ भी गड़बड़ हुई यहाँ पे. But it is secant square, so it should have worked. Cosine is the derivative probably, but wait, इसमें नेगेटिव चाहिए रहेगा, but there is no negative. Where is the negative? Secant x plus some kind of constant. Wait, what? No, this doesn't make sense. Wait a second. I guess this can make sense. अगर मैं, so what if I really do that? Yeah, divide by sine squared or something, or like cosine squared. So the secant आएगा यहाँ पे tan x and secant. Yeah, that's the thing. So secant cosine squared से divide किया, just secant x यहाँ पे tan x secant x, and यहाँ पे secant square x. So just derivative of secant x times secant x times tan y, that's equal to secant square x. So look, secant x times tan y is equal to tan x plus constant secant x tan y, which is b, I think. Wait, no, okay, वो सही नहीं है. Secant x tan y tan x plus c. Okay, so D is the answer. Next question, 144. 144 is the last two digits in the number 3 power 400 are 3 power 400 के last two digits. Oh, you want like modulo 100 in that case, huh? Okay, it's like इसको ऐसे करो ना, mod 4 and mod 25 देखते हैं अपन. So mod 4, like 4 का quotient कितना होता है? 2. So oh, that's really awesome. और जरूरत भी नहीं, just negative 1 power 400 कर दो, which is 1. So it's congruent to 1 mod 4. So 1 mod 4 में, and mod 25 कितना, 5 स्क्वायर का quotient कितना होता है? 20. और ये भी ओके, ऑसम. सो हाँ, टर्न्स आउट कि ये एक्चुअल में 1 रहेगा. सो इट्स 1 mod 25, मतलब the, yeah, 0 1, that is the last thing. So D is the answer. Next question. That was yeah, absurdly easy actually. Okay, 145 करते हैं, चलो. PQR with the 3 points of this parabola such that the normals at these are concurrent in co-normal point center of, look, this I have done a lot, right? This I have done a lot. So इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं. जस्ट y minus 1 का स्क्वायर is equal to 4x plus, okay, यहाँ पे negative 5 plus 1 आएगा, which is like negative 4, which is 4 times of x minus 1, I guess. Okay, we'll just put u equal to x minus 1 and v equal to y minus 1. It just becomes like v squared equal to 4u. अपने जो points रहेंगे, right, okay, so concurrent टाइम का 5 पर है, x equal to 9 and y equal to 5, but then actual में u क्या होगा इसका? So u is just x minus 1, this is like y minus 1, so it's just 8,4. This is h, this is k. Okay, so and what is a, by the way? A is just 1, so a is 1. A plus h upon 2 comma k upon 4, that's the circumcenter basically, right? Yeah,
So that will be what? It's just 1 plus 4, which is 5, and then 1. But ये UV में अभी भी अपने को इसमें convert करना है X में. So it's 6 comma 2, I guess, which is A. Next question. That was so easy. मतलब easy था क्योंकि मुझे पता था ये. Okay, 146. The value of this determinant is, okay, A, फिर यहाँ पे 2B, B, oh god. Uh, this is like what? A and then, probably just subtract कर डालो. हर जगह पे बस subtract करो. Mostly कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा. So this is what? A plus B, A plus 2B. Subtract, so just get 2B, फिर minus B, फिर just minus B once again, because yeah, फिर यहाँ पे B, फिर यहाँ पे B, and यहाँ पे minus 2B. This is like what? B squared, A plus B, A plus 2B. And what you have? 2 minus 1 minus 1, and then you just have 1, 1 minus 2. Awesome. So yeah, subtract that from there, right? It's just B squared. यहाँ पे जगह 8, 2, 1 वो वैसा ही रहेगा हर जगह पे. ये subtract किया, what you get? Let's get like B, and it's getting weird, but whatever. So ये just B हो जाएगा, and not so sure मुझे करना चाहिए कि नहीं. Like A plus 2B you are saying. जो भी है करो यार, क्या जा रहा है. Just B फिर subtract कर just -3, subtract कर just 0, right? यहाँ पे जगह 2B, then we subtract किया, just get -3, subtract किया just -3. Very weird. Okay, अब क्या? अपन B बाहर भी नहीं कर सकते for some reason. Okay, now what? तो अपने को प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा इसको, वो तरीका है नहीं. ठीक है, कभी कभी होता है. अच्छा और subtract कर सकते हैं ना, क्योंकि B squared A 2 1 फिर B -3 0 2 टाइम्स फिर 0 हो जाएगा. यहाँ पे subtract 2 टाइम्स ऑफ दैट, -6 subtract करो just 3 3 -3 हो जाएगा. ये 3 बाहर निकल जाएगा, it's just 1 -1, तो वो 3 बाहर is that, right? Yeah. And using उसमें इसमें ऐड कर दो, it will just become like 0 over here. यहाँ पे 3 आ जाएगा, right? Guess yeah. अब फिर इसको इसमें ऐड करो, just 0 over there. फिर 3 निकाल लो, just 9B square times AB 1 -1 0 0 -1 0 0. Cool. सो अब देखो, अब मिली क्या ना, 9B square इज लाइक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव इसमें, यानी कि -1, एंड देन ये माइनर है, सो नेगेटिव A नेगेटिव B आ जाएगा इसमें, A प्लस B. सो 9B square टाइम्स A प्लस B आ रहा है, आई गेस, विच इज B. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, 147. 147 is, let there exist a unique point P inside a triangle ABC such that angle PAB equal to angle PBC equal to angle PCA. PAB. ओके, ट्राइंगल ABC पहले ड्रॉ करो. ट्राइंगल ABC, उसके अंदर एक पॉइंट P है सच दैट PAB, ये जो एंगल रहेगा इट्स द सेम थिंग एज एंगल PBC. ओके, एंड दैट्स इक्वल टू एंगल PCA. ओके, दिस एंगल, राइट? सो ये तीनों एंगल्स इक्वल है फॉर सम रीजन. सो ये तीनों अल्फा के इक्वल है. इफ PA इक्वल टू X, PB equal to Y, and PC equal to Z, delta equal to area of triangle ABC, and ABC are the sides opposite to triangles ABC. अच्छा, ठीक है. Then tan alpha is, oh, okay, so ये क्या है? A square plus B square plus C square upon 4 delta something. Now that's weird. ठीक है, ठीक है. Tan alpha for some reason. How is tan alpha useful? Like point P is such that this is happening, right? Yeah, so point P कुछ खास प्रॉपर्टीज वगैरह होगी जो अपन यूज कर पाएंगे, नहीं? That this thing is okay, वो फिर समझ गया. That as well. These are all like
Okay, think there exists certain point p like this happens. Okay, इसका अपन क्या यूज कर सकते हैं? uh, this plus that and then this plus that, this plus that. अरे यार ये तो बहुत अजीब हो रहा है नहीं? Okay, what these angles? ये angles का क्या? What about those angles? उफ, ये तो सही नहीं हो रहा यार. So then tan alpha is what? Tan alpha? Why tan alpha? I mean, I don't get it. Tan of alpha? How is that useful? Wait, think. कुछ तो भी ऐसा होगा जो इसमें अपन यूज कर पाए, राइट? विथ रिस्पेक्ट टू पी, तुम्हारे जो वेक्टर्स थे, लाइक दिस इज ए वेक्टर, सपोज ये ओरिजिन है अपनी, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर, व्हाटएवर. तुम्हारा जो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर है, दैट मेक्स दिस एंगल विथ व्हाट? विथ ए वेक्टर, राइट? ओके, इसमें ये एंगल बट ये एंगल विथ ए वेक्टर, बट व्हाटएवर. ओके, ऑसम. सो हर एक में तुम्हारा जो डॉट प्रोडक्ट है वो इनफैक्ट कांस्टेंट रह रहा है, काइंड ऑफ. या could be an important thing, huh? Okay, so b vector minus a vector dot a vector. Actually मुझे हैश लेना चाहिए हर जगह पे. Yes, that is the same for all of these guys. Okay. Dotted with a vector, or like hat of that, of course. Think about this. B vector minus a. That's just the side. Yeah, that's just that side, right? Okay. And then like this length, we don't know what it actually is, so you can't use that. Come on, think. There must be something. सोचने पा रहा यार. How is a square important? Like a कैसे? ठीक है, a square कैसा है इसमें? हाँ, similarity or something. Similarity. How is this going to be similarity of this? यार ये अजीब हो रहा है बस. तो ये साइड लेंथ ऑफ बी विथ दिस. ओके ओके ओके, ये तो रैंडम पॉइंट्स लिखते हैं ना. या दीज कुड जस्ट बी रैंडम पॉइंट्स, बट ये तीनों सेम वैल्यू दे रहे हैं. ये थोड़ा सा अजीब नहीं है? अजीब तो है यार. जैसे इट्स लाइक कैपिटल ए वेक्टर, कैपिटल बी वेक्टर, कैपिटल सी वेक्टर, बिकॉज अपने को डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन पॉइंट्स एंड साइड्स. सो दिस बिकम्स व्हाट? दिस इज लाइक b vector minus a vector, which is our side bc, sorry, side ba, right? Okay, this dotted with a vector upon magnitude of a vector, which we don't know, right? Yeah, maybe don't know actually ये क्या होगा. Seriously, I don't know कि ये कैसे solve करें. Must be something that we can do, right? Okay, this is alpha, this thing is alpha. ये चीज़ क्या हो जाएगी? This is b minus alpha. What about this one? So इनको add किया just b basically. So this is like pi minus b. Maybe that is somehow important क्योंकि ये pi minus b है. So then ऐसा कौन सा होता है जिसमें सिर्फ pi minus b मिल जाए? Wait, why pi minus b and not? कुछ तो अजीब है नहीं? Yeah. So ये length upon sine of b is equal to ये length upon sine of alpha. Okay. But ये length तो proportional है sine a से. So this length is like proportional to sine a. Sorry, sine c upon sine b. No, I'm not understanding इसमें क्या usefulness है. I don't think this is useful at all. Can you actually like figure out कि ये length क्या हो? शायद से तुम figure out कर सकते हो. It is proportional to sine something. Okay, करते हैं ना. Let's try it out. We'll try to figure out कि ये length कितनी है. This will similar, तो ये यहाँ पे अल्फा था और यहाँ पे बी था, इसलिए so this will be what? Similarly
ये जो एंगल रहेगा दिस विल बी पाई माइनस सी, राइट, एंड दिस विल बी पाई माइनस ए. ओके, सो ये लेंथ कितनी रहेगी? दिस लेंथ विल बी व्हाट? दिस इज, think. Sine of b upon this length is c. C is, and that's equal to what? That's equal to ये length, we'll call this like t. Okay, d and sine of ये वाला angle, or maybe we don't want that angle. Hmm. Maybe we should be thinking about this length first. So ये length होने के लिए we can use this triangle, I guess. Okay, so we'll use that. Sine a upon b is equal to sine alpha upon ये वाली length which is t. So t is equal to what? Sine alpha times b upon sine a. Okay, और फिर ये चीज times like this. Okay, ये length which is just c. So basically like bc sine alpha upon sine a, half of that, and that times of sine alpha, what's like sine square of alpha, right? Yeah, this is the thing. This is इसका एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया. तो फिर ऐसी चीज बस तुम ऐड करते जाओ, लाइक क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा, ये सब ऐड कर दिया. इट्स जस्ट गॉड, इट्स जस्ट सो वियर्ड. लाइक ए अपॉन साइन ए हर जगह पे, एंड सही नहीं लग रहा यार. दिस जस्ट डजंट फील करेक्ट. साइन ए यू आर सेइंग, अपन ने ए इसको बाहर निकाल भी लिया, बट देन व्हाट आफ्टर दैट, राइट? ओके, थिंक. साइन ए, ओके, 2r साइन ए इज इक्वल टू ए, तो फिर साइन ए जस्ट ए अपॉन 2r, वो चीज यहाँ पे पुट कर सकते हैं. बी सी अपॉन ए, फिर 2r ऊपर जाएगा, सो ये सिर्फ यहाँ पे r साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा. ओके, तो इसका समेशन, सो लाइक ए बी सी आर साइन स्क्वायर अल्फा, और फिर 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, राइट? दैट्स नॉट हेल्पिंग बिकॉज ये इस फॉर्म में अपने को नहीं मिल रहा है. ओके, आई डोंट नो इसमें क्या करना चाहिए अपने को. अपन ने ये भी ट्राई कर लिया, कुछ हुआ नहीं इससे. हाँ, अब इट इज नॉट हेल्प अस. तो ये तो हेल्प करनी चाहिए थी इससे, बट लाइक कुछ भी नहीं हुआ. या दिस रियली डिडंट हेल्प एक्चुअली. और फिर यहाँ पे साइंस अल्फा आ गया, वो तो कांस्टेंट है, मैंने बाहर भी निकाल दिया एंड एवरीथिंग, आई गेट दैट. इट्स स्टिल नॉट हेल्पिंग दो. फिर क्या आ जाएगा? ए बी सी समेशन ऑफ 1 अपॉन ए टाइम्स आर साइन स्क्वायर अल्फा. दिस थिंग इज योर डेल्टा, राइट? एंड नाउ व्हाट? आर को अपने को निकालना पड़ेगा, राइट? वी डोंट वांट आर ओवर देयर. ओके, थिंक हाउ डू वी गेट rid of that r stuff? uh, r is equal to anything which is like sine alpha plus all of that, right? Okay, yes, you can use that. Not recommended though. Mm, somehow r completely, I just want using delta, and I, yeah, there was one way of getting it actually. इतना बुरा भी नहीं था वो. Getting tired. So r can be written as semi perimeter upon summation of sine a or something. Okay, that's not exactly helping, is it? Oh, okay, that there was another way. So you know that delta is just equal to half ab sine c, but then what is sine c, right? So 2r sine c is equal to c, मतलब कि sine c is just c upon 2r, तो वो चीज़ यहाँ पे c upon 2r, मतलब कि yeah, like r is just abc upon 4 delta, तो उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं. Hopefully that will give us something. So this is like abc का square summation of 1 upon a times sine square of alpha, that is equal to 4 delta square. This is the only thing I could get. ये तो यूजफुल नहीं है यार, इसमें a square plus b square plus c square कहीं नहीं आया. Okay, then this is just not doable. That's it. कुछ तो इन लोगों की गलती हुई है या फिर कुछ वैसा हुआ होगा, right? Because this is not helping. So just move on. Next question. I'm getting sine square alpha, but not what I want. मैं क्या करूँगा? Okay.
just weird. 148. A tangent having slope of 4/3, uh, sorry, no, negative 4/3 to this ellipse intersects the major and minor axis at points A and B respectively. Slope दिया है to this ellipse. Okay, cool. ठीक है, स्लोप दिया टेंजेंट का एंड दिस इज टू दिस एलिप्स, टेंजेंट है उसको, intersects the major and minor axis in points A and B. Major and minor. Okay, ठीक है, ठीक है, ठीक है. If C is the center of the ellipse, then area of triangle ABC is like ऐसा, and then you want ABC का area, right? So you can negative 4/3 slope है, and this is okay. Just first of all squish it back. So 32. God, इसमें क्या टाइप के like what is this? Square root of 18, seriously. ठीक है, so when A is square root of 18 and B is square root of 32, वो भूल जाओ अभी के लिए, we'll just deal with variables for now. So तुम्हें slope दिया है and तुम्हें A and B दिए हैं, you have to figure out triangle का area, right? तुम्हें जो M दिया है तुम उसको वापस, right, so तुम वापस उसको expand करोगे, what do you get, like हर x यूनिट का क्या हो जाएगा, A से छोटा हो जाएगा, and then हर y यूनिट b से छोटा हो जाएगा, right? So just 1 upon b upon 1 upon a upon b times m is the new slope, right? Of course. So you got that. Okay, तो अपने को ये चीज मिल जाएगी. Think about it. अपने को यूनिट सर्कल मिल चुका है. You got this slope is tan. तो फिर इसका like negative b upon am, that's tan of theta, जहाँ पे theta ये है of course. And what you want is want this. Okay, this is 1. ये चीज 1 है, which means this length is what? God, ये बहुत लंबा नहीं हो रहा है. This length is okay, it's like 1 upon cosine theta, 1 upon sin theta हो जाएगा ना. So 1 upon SC, yeah. Actually not 1 upon, it's 1 upon sine of 2 theta चाहिए अपने को. You know that tan theta is just this thing. So ये जो चीज होगी that's like 1 upon 2 tan theta, फिर 1 plus tan square theta ऊपर चल जाएगा, whatever. So yeah, वो चीज, right? 1 plus tan square theta is like a square m square plus b square, और फिर नीचे आ जाएगा क्या कर रहा हूँ ये सब, फिर negative 2a mb, I guess. Yeah, that's the thing. So this is the area is coordinate frame. अब अपने को वापस जाना है, right? So अपने को हर x coordinate का a times करना है, इसका p times, like इसके में times a b कर डालो basically, ये चला जाएगा, which is basically like saying that a squared m squared plus b squared upon negative 2m, that is the area. Yeah, so calculate this thing. कितना हो जाएगा ये, a कितना है अपना, a square दूंगा like 18 and then you want m square, so 18 times 16 upon 3 plus b square कितना था 32, फर्क नहीं पड़ता कौन सा बड़ा है, upon negative 2m which is just 8 upon 3. oh ये 9 चाहिए ना, sorry it's supposed to be 9 over there. तो ये हो जाएगा कितना, 32 plus 32 64, 64 upon 8 ऊपर 3 यानी कि 24, 24 students. So B is the answer. Next question. 149. Is consider the equation okay where a is an integer lying between 1 to 100, total number of different values of n so that the equation has integral roots. एक equation है, okay, a is an integer, a कहाँ पर है इसमें, मुझे कहीं नहीं दिख रहा. हाँ, total number of different values of n, so I think n चाहिए यहाँ पे, n is an integer between 1 to 100, n की values such that this equation has integral roots. Okay, it's like this thing, x times of x plus 1 is equal to n. स्टार्ट करो, और इंटीग्रल रूट्स यानी कि पॉजिटिव की नेगेटिव के क्या, आई गेस दोनों सर जाएंगे ना, क्या फर्क पड़ता है, कॉन्जिक्यूटिव चाहिए उतना ही है, राइट? तो जीरो तो चलेगा नहीं, तो स्टार्ट विद 1, सो लाइक 1 times 2, फिर चलते जाओ, या so 1 times 2 is 2, 1 2 times 3 चलते जाओ, eventually you get like 50 times 51, तो यहाँ पे बड़ा है इनफैक्ट. Okay, 10 times 11 बहुत बड़ा हो जाएगा, 9 times 10 90, that's where it is, right? So x equal to 9 तक, x equal, yeah, right. So
कितने 9 वैल्यूज रहेगी n की such that this happens, which means, right, I mean that is the thing, right? So one page has जल्दी जाने दे. At 9 you will just get the thing. 9 times of 10 is 90, and you will never get like 10. 10 तो काम नहीं करेगा उस 10 times 11 is 110, so that doesn't work out. Okay, it should be 9 और इसमें नहीं है, so D is the answer because x equal to, yeah, okay, I mean, that is the thing, right? What could go wrong? Yeah, like 1 times 2, 2 times 3 चलते जाओ till 9 times 10. Those are all the things that it could be. Okay, और कोई तरीके से हो नहीं सकता कुछ. So those are the values of n. तो 9 ही values है ना. Yes. Next, 150. Last question for today. 150 is fx equal to this thing where m and n are both even natural numbers. Fx has exactly one local minimum. अच्छा, fx की बात करें ना, एक काम करो, just call what natural log of fx, उसकी बात करते हैं. So natural log fx का मिनिमम मैक्सिमम कब आने वाला है? जब fx आएगा तब इसका भी आ जाएगा. So yeah, yes. So like m natural log of x minus 1 plus, oh यहाँ पे n चाहिए, I guess, yeah, it's n over there, plus m natural log of x minus 2, right? This derivative occurs just n upon x minus 1 plus m upon x minus 2. This should be equal to 0 for extreme values, which means like n times x minus 2 plus m times x minus 1 equal to 0, right? तो अपने को चाहिए कितने लोकल, सो ये लीनियर इक्वेशन है, इसका एक ही सॉल्यूशन आएगा, राइट? सो दिस हैज ओनली वन लोकल मैक्सिमा और मिनिमा. लेट्स सी वो मैक्सिमा है कि मिनिमा है. ओके, सो एज x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये चीज क्या इंफिनिटी अप्रोच कर रही है? ऑफ कोर्स इट्स प्रोबब्ली जस्ट अ मिनिमा बिकॉज कांट बी अ मैक्सिमा. या, and even as it approaches negative infinity, the even natural numbers, you know, that's why, yeah. Okay, so that explains it. So it has exactly one local minimum, so A is the answer. Yeah, that should be the thing. What else could be the thing, right? Okay, next question. Still not making. Oh shit. Oh no. Oh no. 3 तक हो सकते हैं because f dash, okay समझा. So f dash upon f is this thing, but then कभी कभी f भी 0 हो सकता है ना. So f dash equal to f times this stuff and then, right, okay, और even natural numbers, so right. So when x is equal to 1 or x equal to 2, तब तो अपने आप हो ही जाएगा, and then this thing, yeah, जब भी ये होगा तब भी होगा. It's like 2n plus m upon n plus m, या फिर बोल सकते like 1 plus n upon n plus m, तब भी, right? So this is a fractional value, of course. मतलब हाँ, इसके 3 extreme values हो गए. Okay, so this is wrong. हाँ, fine. Do I really have to think about this second derivative? I don't want to think about that. Think local minima and maxima, whatnot. What do I do? इस डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं. इनफैक्ट दिस इज लाइक व्हाट n x minus 2 की पावर, अच्छा f रहेगा वो तो पॉजिटिव रहने वाला है हर बार बिकॉज यस. सो इसकी बात करते हैं. ये जो वैल्यू इज कॉल्ड इज लाइक x नॉट इज बिटवीन 1 and 2, I guess. So 1 2 x naught. इसके बाद में ये चेंज हो रहा है, राइट? सो बिफोर दैट इट वाज लाइक पॉजिटिव थ्रू आउट, आई गेस. या, सो यहाँ पे कैसा हो रहा था ये कि पॉजिटिव था तुम्हारा बिकॉज लाइक एफ डैश की बात है एक्चुअली. एफ डैश तुम्हारा यहाँ पे पॉजिटिव था थ्रू आउट, यहाँ पे 0 था, एग्जैक्टली टच हो रहा है सिर्फ, एंड देन यहाँ पे स्विच हुआ, नाउ इट्स नेगेटिव बिकॉज, वेट व्हाट, नो नो नो, नहीं इसके बाद में पॉजिटिव होगा, उसके पहले नेगेटिव रहा होगा ना, ऑफ कोर्स. ओके कूल. So it was actually like negative. Cool. फिर यहाँ पे just touch हुआ, फिर अभी पॉजिटिव हो गया, and now it's like this. Okay, understood. तो ऐसा ऐसा कर्व है, which means कि
यहाँ पे इसका सेकेंड डेरिवेटिव, सो दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यूज, और as you can see इसका स्लोप यहाँ पे, okay, नहीं, वेट, ये फर्स्ट डेरिवेटिव ही है ना जो अपन ग्राफ कर रहे हैं, हाँ ऑफ कोर्स। सो एट दिस पॉइंट इट्स स्लोप मस्ट बी जीरो बिकॉज ये जस्ट टच करके भाग गया होगा, राइट? या और उसके पहले तो ये हमेशा, ऑफ कोर्स दिस कैन ओनली बी वन थिंग, यहाँ पे इसका स्लोप जीरो है, सो लाइक सेकेंड डेरिवेटिव जीरो, तो इसके दो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हो गए। व्हाट, हाउ कैन दिस बी? इसके दो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हो गए दैट इज, इसके बाद में पॉजिटिव, इसके पहले पॉजिटिव है, एंड देन जस्ट यहाँ पे जीरो टच कर रहा है, एक ही तरीका हो सकता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ओह गॉड, या या लाइक सेकेंड डेरिवेटिव इसका जीरो था यहाँ पे, एंड यहाँ पे जीरो था, सो ठीक है वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स है, वी डोंट केयर अबाउट दोज इन दैट केस। इसका मतलब हुआ कि हाँ इट स्टिल जस्ट हैज वन एक्सट्रीमम, और ये दो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हैं उनका अपन भूल जाओ। और इसमें क्या हो रहा है, इसका सेकेंड डेरिवेटिव कैसा होगा, पॉजिटिव ऑफ कोर्स, सो सेकेंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, मतलब it's a minimum value. Okay, so it just has one local minima, although it has 3 points where first rate is zero. So फिर A is the answer. Next question. Next क्या, बस इतना काफी है. This is it. Let's see you guys next video. Bye.